Assalamu alaikum friends. Today I'm sharing my most favorite pizza recipe. It's ranch pizza recipe. It's super creamy, yummy and soft. It's cheesy and most delicious pizza. Note the ingredients. In a bowl, add chicken, salt, red chili, गरम मसाला भी हम इसमें ऐड करेंगे, cumin पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, चिली फ्लेक्स, लेमन जूस, योगर्ट। इसके अंदर सारे मसाले हम ऐड कर इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। Marinate for 20 minutes. In a frying pan, add cooking oil, ginger garlic paste. इसको अच्छे तरीके से पकाना है जब तक कि ये कलर अपना चेंज ना कर दे। जब ये ब्राउन होने लगे तो हम इसके अंदर मीडियम फ्लेम पर कुक करेंगे चिकन को। जब ये अपना पानी बिल्कुल खुश्क कर देगा तो हम इसको एक साइड पर रख देंगे। डो की रेसिपी मैं ऊपर आपको शेयर कर रही हूँ, जो कि पिज़्ज़ा डो की रेसिपी भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैंने जो इसमें ली है वो पिज़्ज़ा क्रस्ट, जो कि ऑलरेडी मार्केट में होता है, वो मैंने लिया है। उसके ऊपर मैंने पूरी रांच जो हमारी सॉस है उसको मैंने स्प्रेड कर दिया है। देन ऐड अनियंस। अनियन क्यूब्स को अच्छी तरीके से फैलाकर हम इसके अंदर कैप्सिकम भी ऐड कर रहे हैं। Also add mushrooms. Then add cooked chicken. Also add olives. Then add cheddar and mozzarella cheese. We can prepare 3 to 4 large pizzas with this quantity. चीज़ अगर आप ज़्यादा चाहें तो आप ज़्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। Bake in preheated oven at 200 degree for 5 to 7 minutes. Take out from pizza pan and drizzle ranch sauce, then cut into slices and serve.